Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 11th of April. The session will be quite interesting and important students. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning students. These videos are quite important and helpful for your competitive exams. So do watch these videos till the end. In this video students, we will be talking about cabinet approvals. We will be talking about the first ever PAI baseline report that has been released as well as an index has been released here. We will be discussing about it. Then we will be talking about a memorandum of agreement that has been recently signed for Nibdeshak Didi that will boost the financial literacy specifically in the rural India. Next thing we will be talking about India Skill Accelerator program that has been launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and World Economic Forum. Together they have launched this India Skill Accelerator. Why this has been launched and regarding this multiple news will also be discussed in this video. Stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. First news is about cabinet approval. Cabinet approvals for 9th of April, and first thing that union cabinet, it is chaired by whom? It is chaired by Prime Minister Narendra Modi, and this is the third term for the Prime Minister Narendra Modi. He has approved certain approvals. First is he approved this union cabinet has approved 1600 crore rupees new sub scheme that has been named as modernization of command area development and water management. This scheme has been launched under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the period 25-26. This is your first thing. Second thing we are talking about is for the construction of a 19.2 kilometer long 6-lane access control Zirakpur bypass that will be starting from NH7 from Zirakpur to Patiala. Correct? And it will be ending at NH5, that is from Zirakpur to Parwana. Correct? And what this will do is this Zirakpur bypass, it will be connecting states of Punjab and Haryana. Next thing is third thing, here Union Cabinet has approved the doubling of a 104 kilometer long Tirupati Pakala Katapati single railway line section in Andhra Pradesh and Tamil Nadu with an estimate cost of nearly 1332 crore rupees. So these are the three approvals students. Let's revise them. 1600 crore rupees for a new scheme that is modernization of command area development and water management. Second is for Zirakpur bypass of 19.2 kilometer long, and third is doubling of 104 kilometer long Tirupati Pakala Katapati single lane line section. Right? Now students, let's move on. Next is first ever PI baseline report for 23 has been recently launched here. Right? This PAI. What is this PAI? It is your Panchayat Advancement Index. I repeat, it is your Panchayat Advancement Index, PAI. This is the first ever edition of this PI index that has been launched, or this PI baseline report that has been launched for FY23. This report is talking about that whether our panchayats are following the sustainable development goals, how we are localizing towards these sustainable development goals in the rural area specifically, right? So this tool, this report, correct, talks about this. And here in this index, first thing remember, it is Gujarat that has secured the top position in this PI baseline report for FY23. First was Gujarat, second Telangana, third Tripura, fourth Maharashtra, and fifth is your Uttar Pradesh. These
poverty indexes, or these basically the sustainable development goals themes that is talking about in this baseline report for the panchayats. It consists of 9 themes. These themes includes your on based on this report was generated. So 9, on the basis of 9 themes this report was generated. It includes your sustainable following the goals such as your good governance, poverty, livelihood, right, and following of those sustainable development goals. Moving on, next is IEPFA and IPPB. What is this IEPFA? This IEPFA stands for Investor Education and Protection Fund Authority. It is New Delhi based. And IPPB, it is India Post Payments Bank. MOA is your Memorandum of Agreement. So recently IEPFA, that is New Delhi based, IPPB, that is Indian Post Payments Bank, right, they have recently signed a memorandum of understanding or memorandum of agreement, right, and it was signed to launch the second phase of Nirveshak Didi that will boost financial literacy in the rural India. See students, day before yesterday also we discussed that if India wants to become a developed nation by 2047, so the participation of women in the economy is must, right. Women should also contribute towards the jobs, they should also work towards the jobs, as they will have to contribute towards the economy in order to rise the per capita GDP, because they will be earning, so they will be supporting their houses also it will be helping to enhance the per capita of the country as a whole, correct. So the start should be from the rural areas, because we are seeing that in the urban areas the women are mostly working, but in the rural areas the reach has not been there yet. So in order to boost the financial literacy in the rural areas and skill them in certain areas where they can become entrepreneurs or they can do jobs in certain sectors, correct. So for this a initiative has been launched to provide financial literacy in the rural areas, correct. This Nirveshak Didi, the second phase of this Nirveshak Didi was launched, correct. What this will do is this will promote financial literacy among women in rural, semi-urban and underserved areas across India. Also this Nirveshak Didi, it is a community-led financial literacy program that will train women postal workers and community leaders for their financial education in their local bodies. What this will do is by providing financial literacy, we can talk to women or we can provide skills to the women in the field of investing, right. They can do fraud prevention, saving habits, and the use of digital banking tools can be provided to them, right. Take a note of this students. Then if we talk about IEPFA, who is the chief executive officer here? Anita Shah and Shah Akela, this is the full name. Where is the headquarter of IEPFA? It is in New Delhi. It was established in 2016. If we talk about IPPB, Indian Post Payments Bank, right, 100% of this bank is owned by the government of India. Then who is the managing director and chief executive officer here? Are Vishwaran, and the headquarters is in New Delhi, established in 2018. Moving on, MSDE and World Economic Forum to launch India Skills Accelerator to bridge skills gap. I repeat, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Switzerland-based World Economic Forum. These two organizations came together and they have launched a India Skills Accelerator. This is a public-private partnership platform that will aim at providing skills to the youth of India. Skills to the youth of India, correct. So this is basically a skilling challenge. This initiative will bridge the skilling gap, as we know that in order to get jobs in today's world, the private jobs are highly competitive, right. So there must be skills in those students and they should be highly skilled to get a job, because for a single post we are seeing thousands of applications are coming, so you have to stand out among the thousands in order to get a particular job. So for the same reason, so that the youth when they are getting out of the college, they are job ready and they can get the skills that they can get the jobs that are in the market. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and World Economic Forum, they have launched India Skills Accelerator that will bridge the skilling gap in India. Together, this platform will bring multiple sectors together that will promote innovation, that will promote research and development. Also, they will be seeing that usage of today's technology, say for example, artificial intelligence, machine learning, robotics, energy, space, right,
cloud computing. So these are the fierce topic of today's generation, and these are the technologies. But you will be seeing that in coming years there will be highly automated setups that will be coming, and you will be seeing that the change of job market will also be changing. So let's see how will things play out. But as of now, remember, so we need to skill the youth in order to provide them with better job opportunities. If we talk about World Economic Forum, where is the headquarter of World Economic Forum? It is in Cologne, Switzerland. And who is the chief executive officer and president here? Borge Brand. Borge Brand. He is of Norway. Right. Next is Union Minister Ram Mohan Naidu has inaugurated DFDR and CVR lab at AAIB. First thing first, what is DFDR? DFDR is your data recorder, and this DFDR is your digital flight data recorder. Digital flight data recorder. CVR is your what? CVR is your cockpit voice recorder. So data flight data recorder, digital flight data recorder, and cockpit voice recorder. Correct. And AAIB, it is your Aircraft Accident Investigation Bureau, that is located in Udan Bhavan. Correct. So coming back, students, Union Minister Ram Mohan Naidu, he inaugurated this DFDR, that is your digital flight data recorder and cockpit voice recorder DVR. This is a lab that has been launched where? At AAIB, that is in Udan Bhavan, New Delhi. Correct. This CVR lab, that is your cockpit voice recorder lab, it is also known as the black box lab. What is a black box? Black box, generally in a flight when there is an accident, right, there is a box that records all the information about the flight. What was missing, what changes took place, what are the reasons that there was an accident, or if anything was not working, the reason for it, why it was not working. And it is made of very hardy material. Even on the accidents, it does not get destroyed. It is used by the aviation organizations, aviation companies, to study that what went wrong, and they can implement the changes in the system of those aircrafts, right? So further, these things do not occur. So these DFDR, that is your digital flight data recorder, and cockpit voice recorder, they have been recently inaugurated at AAIB, that is Aircraft Accident Investigation Bureau, that looks after all the accident investigations that take place in airline sector, right? And similarly, as we discussed, this CVR lab, this is a black box lab that is equipped with the state of the art facilities with an investment of 9 crore rupees. Also remember, here Ram Mohan Naidu, he has also inaugurated one more thing, that is career guidance program in the aviation sector, right? This career guidance program will be to educate class 11 and class 12 students about the various career opportunities in the aviation sector. Correct. Take a note of it. Next, here you can see this aviation career guidance program for class 11th and 12th students about career opportunities in the aviation sector, that includes your piloting, air traffic control, aircraft design, and airport management. Next is Union Minister Sarbandana Sonowal has launched digital portal for national waterways. I repeat, Union Minister Sarbandana Sonowal, he is the Union Minister of Ministry of Port Shipping and Waterways, and has launched a dedicated digital portal developed by Noida UP based Inland Waterways Authority of India. This portal aimed to facilitate the ease of doing business, and it encourages the private sector participation in the inland waterway transport across India. Who is the chairman of IWAI, Inland Waterways Authority of India? Vijay Kumar. Correct. Take a note of this. So Sarbandana Sonowal has launched a digital portal for national waterways. These new regulations has also been coming into play. These new regulations basically will lay out a framework for the private entities, that how they can invest in the construction and operation of the jetties, various terminals that will be setting up a vast network of the national waterways in India. If you remember, students, recently there was a news also that after cleaning of Yamuna, waterways, or we can say jetties, not ships we can say, but cruises or cruise tourism, in simple words, cruise tourism will be starting in Yamuna. There was a news of that after cleaning of Yamuna, we will start cruise tourism there also, right? So these are some things that you need to remember here. Where is the headquarter of Inland Waterways Authority of India? It is in Noida. Noida is in UP.
His Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched India's first high altitude atmospheric and climate research center in Jammu and Kashmir. I repeat, India's first high altitude atmospheric and climate research center. Take a note of this, students, important. So this high altitude atmospheric and climate research center, it is located at 2250 meters at Mandolti village in Udhampur district of Jammu and Kashmir. This center will focus on climate forecasting, aerosol studies, cloud microphysics, weather pattern analysis, cloud formation, right, and many more in the northwestern Himalayan region. Take a note of this, students. Who is the Chief Minister of Jammu and Kashmir? Omar Abdullah. And Manoj Sinha is the Lieutenant Governor here. Why Lieutenant Governor? Because Jammu and Kashmir is a union territory. Next, also remember Indo-Swiss collaboration has been done here, right? Alongside the inauguration of the center, Indo-Swiss joint research project titled Ice Nucleating Particles and Cloud Concentration Nucleus Properties in the Northwestern Himalayas was also flagged off in the Udhampur district here only. So just remember this also. Next is banking and finance, students. Bharat Pay's resilient payment secured RBI approval. NOD means approval to operate as a payment online payment aggregator. Who are the payment online payment aggregator? These are the payment aggregators who receive payments, the merchants on the behalf of the payment. See, merchants is sending payment from one merchant to another, so they enable them, they receive the payment on the behalf of the merchants, right? So Bharat Pay's resilient payment secure this RBI's approval, as now they will be acting as a payment aggregator. If it would have been a payment aggregator cross border means now the payment can be received and sent from our country to different country within the two countries, right? So it is not a cross border, so that means this will be operating within India only, in nationally only, correct? And with this authorization, Resilient Payment is set to introduce its online payment aggregator platform under the name Bharat Pay X. Next students, we are talking about economy and business, and Asian Development Bank, they have revised the India's GDP forecast for FY 26 to 6.7%, right? This is amid the tariff war that is going on, right? This is among the tariff war that is going on. USA has levied heavy tariffs on multiple countries, especially on China. But there was a news today in the morning that he has said that for next 90 days all the tariffs has been paused except the 10% that will be levied on the other almost all the countries, but on China the tariffs has been around 104%. I think it was raised to 125%, correct? So this is the tariff war that is we are seeing in the world today. Even today, if we talk about India and European Union, we are also working upon a thing that is free trade agreement, and it is expected that 90% of the products we have seen here, or 90% of the trade has been finalized here. This free trade agreement has been finalized here, and we will be seeing that by the end of this year 2025 this will be coming into play, correct? So this data projection was done by Asian Development Bank. President of Asian Development Bank is Masato Kanda of Japan, headquartered in Manila, Philippines, and there are 69 member nations of Asian Development Bank. Next is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. They have recently signed a memorandum of understanding with SDHI to boost the indigenous commercial shipbuilding. Right? What is SDHI? SDHI is your Swan Defense and Heavy Industries Limited, right? And you are seeing here it is for the boosting of the commercial shipbuilding indigenously. That means in this will be promoting Make in India, will be focusing on making these commercial ships in our country India. What this will do is this will save the money that used to go out. Also it will help us to create job opportunities in the particular sector here, right? So this will boost the India's maritime self-reliance by giving them commercial ships, right? And in the manufacturing sector we will be seeing that we will be manufacturing this, so Atmanirbhar Bharat initiative will also get strengthened. With this collaboration here you will be seeing GRSE and SDHI, they will be seeing or sharing their facilities, they will be sharing their expertise, and will be coming and together and developing this commercial shipbuilding in India. If we talk about GRSE,
Where is the headquarter of GRSE? It is in Kolkata, West Bengal. Next is Poonawalla FinCorp has launched shopkeeper loan business for small retailers. I repeat, Pune Maharashtra based NBFC Poonawalla FinCorp Limited, right, which is promoted by Cyrus Poonawalla Group, has announced the launch of shopkeeper loan businesses. This new product, as the name suggests, will offer customized financial solution to the small retailers and kirana stores across India, thus enhancing the competitiveness of the small retail businesses. As we know, these small retail businesses, they are suffering. Why? Because of coming of Zepto, Blinkit, right? These are the online food or online retail delivery platform, e-commerce platform, and it has made them that so easy for you to order anything, and in just 5 to 10 minutes you will be getting that product. You do not even have to step out of the house. So this has been a game changer, but because of the launch of this, we are seeing that the kirana stores, the small retailers, they are being impacted. Next is GSL and IIT Hyderabad. They have partnered to transform shipbuilding with AI and digital twin technologies. GSL, that is your Goa Shipyard Limited, and Hyderabad, Telangana based Indian Institute of Technology, Hyderabad. They have signed this memorandum of understanding to integrate artificial intelligence and digital twin technologies in the India's maritime sector. See, students, whether you like it or not, that AI is the future. Most of the things will now be automated with artificial intelligence, right? So if an organization is not doing so, then that particular organization will be left behind in the journey. So because of this, we are seeing that most of the companies now are adopting artificial intelligence. If they are not in the digital space, they are getting into the digital space, correct? So to enhance the India's maritime sector, an MOU has been signed between Goa Shipyard Limited and IIT Hyderabad. And also remember, this initiative is the Asia's first AI-driven maritime security project, aims to streamline the decision making and promote eco-friendly practices. Next is IOC, that is your Indian Oil Corporation, New Delhi based. They have recently signed a 61,077 crore rupees contract, or they have signed a contract to invest this amount in a petrochemical complex in Odisha. I repeat, IOC, they signed an MOU with Odisha government for 61,077 crore rupees, that this amount they will be investing in a petrochemical complex in Odisha. Take a note of this, very important. Next is acquisition and mergers. CCI approvals we will be talking about for 8th of April. First, acquisition of equity shares of Mumbai Maharashtra based Shriram Asset Management Company Limited by Mauritius based Sanlam Emerging Market Limited and Chennai Tamil Nadu based Shriram Credit Company Limited. This was first. Second is approval or approved the proposal of the GIFT City Gujarat based Multiples Plenty Private Equity GIFT Fund to acquire shareholding in the following entities. So this will be acquiring the stakes in these companies. Next is important day, students. World Homeopathy Day observed on 10th of April. This day is observed basically to create awareness and the contribution of homeopathy in the healthcare, global healthcare sector. This homeopathy basically means, homo means similar and pathos means suffering. Also, in order to promote homeopathy medicines globally, this day is being observed. Next is PM Modi inaugurated the Navkar Maha Mantra Divas and has urged the 9 resolutions for sustainable future. Coming back, PM Modi inaugurated Navkar Mahatma Drive, Mahatma Divas. This Navkar Mahatma Divas, when do we observe this day? On 9th of April. Correct. And PM Modi participated in this Navkar Mahamantra Divas. This was held at Vigyan Bhavan in New Delhi. This event marked the global spiritual gathering and promoting peace, non-violence and inner harmony by chanting the Navkar Mahamantra, the most revered chant in the Jainism. Right, so 9th of April observed as Navkar Mahamantra Divas, right? And for this, PM Modi was there to attend the event here. Next is Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has also unveiled a special philatelic cover on the World Navkar Mahamantra Day that we just observed on 9th of April. Moving on, next is state news, students. Maharashtra government renamed Khulatabad as Ratnapur. I repeat, Maharashtra government has named Khulatabad as
Ratnapur. This initiative is a part of the government's broader effort to restore the original names of places that were altered during the Mughal era. And in addition to the renaming, the Maharashtra government plans to develop a memorial in Khultabad to honor the history and legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his son Chhatrapati Shambhaji Maharaj. So students, that's all for the day. Now let's move to the revision part. They will be very beneficial for your learning, and then we'll be proceeding to the homework section. Team has won the title of Pro Kabaddi League Season 11 by defeating Patna Pirates in the final that was held at Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex in Balwadi, Pune, Maharashtra in December 2024. So name that team, that is Haryana Steelers. This marked their first ever Pro Kabaddi League title for Haryana Steelers, and they have won a prize of 3 crore rupees, and this was the season 11 of the Pro Kabaddi League. Next, who won the inaugural King Cup International Badminton Open 24 title after defeating China's Hu Jian in the final match? Right? Who won the inaugural King Cup title International Badminton Open? It was won by Anders Antonsen. Right? Anders Antonsen, he is of Denmark. Next, who was appointed as a board member in the new interim Asian boxing body formed after Asia inclusion in the world boxing structure in December 24. So, who was appointed as the board member? Ajay Singh. Next, which state has recently claimed the 78th Santosh Trophy title by defeating Kerala in Hyderabad, Telangana? This Santosh Trophy, this is related to which sport? It is related to football. First question. Second, which state has won the 78th Santosh Trophy title? It was won by West Bengal. The final was held where? It was held in Hyderabad, Telangana, and this is West Bengal's 33rd time winning this Santosh Trophy. Next, name the mascots unveiled by the Kho-Kho Federation of India for the first ever Kho-Kho World Cup scheduled from 13th to 19th of January at Indira Gandhi Indoor Stadium of New Delhi. So name that mascot. It is Tejas and Tara. The tournament will feature 21 men's and 20 women's team from 24 countries, and the mascot Tejas and Tara are dynamic gazelles that represent the spirit of the tournament. And this was the first ever Kho-Kho World Cup scheduled from 13th to 19th of January by Sports Authority of India, will be held at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Next, and one more thing, there was a green trophy for women and a blue trophy for men. Next, which of the following points are correct with respect to the test series to win the Border Gavaskar Trophy held between India and Australia in Sydney, Australia? If we look at the options, option A and C are right, B is wrong. B is saying Ravi Chandra Ashwin was awarded with the Player of the Series title as he emerged as the highest wicket taker of the tournament with 22 wickets. Is it correct? So Ravi Chandra Ashwin was awarded here? No, Ravi Chandra Ashwin was not awarded, but who was awarded with this trophy? Jasprit Bumrah. Now option B is also right. Next, cricketer Martin Guptill, who recently announced his retirement from international cricket, represents which country? He represents New Zealand. Next, which of the following cricketers from Bangladesh has recently announced retirement from all the forms of international cricket? So Tamim Iqbal Khan has announced retirement from international cricket. Next, which football club recently defeated Real Madrid to win the 41st edition of the Spanish Super Cup final held in King Abdullah Sports Stadium in Jeddah, Saudi Arabia? So it is Barcelona, right? They have defeated Real Madrid to win the 14th edition of the Spanish Super Cup title. Take a note of this. This is important. And Barcelona, this is 15th time that they have won this title. Next, which of the following are not correct with respect to India Open Super 750 badminton tournament held from 14th to 19th of January? If we look at the options, option A is only right, B and C are wrong. I correct students, it is asked which is of the following is not correct. So A is not correct, B and C are correct. A is saying that Hong Kong's Lee Chuk Yin has won the men's single title in the finals. Is it correct? No. So Victor Axelsen of Denmark has recently won the men's single title here. Next, which of the following are correct with respect to the Kho-Kho World Cup held from 13th to 19th of January in New Delhi? If we look at the options, the correct one, it is A and C. B is wrong. B is saying that Indian women's team has won the Kho-Kho World Cup title by defeating Sri Lanka in the finals. Is it correct? So no, remember Indians men team
here they have defeated Sri Lanka in the finals, right? And Indian women's has won their title by defeating Bangladesh in the finals. Yes, correct. Now all the options are rightly mentioned. Next, the International Tennis Federation recently announced Dash and Iga Natalia Swiatek as men's and women's ITF world champion for their exceptional performance. So who was announced as the women's uh, ITF world champion? Iga Swiatek. And for the men's category, Jannik Sinner. Jannik Sinner, correct, he is from Italy. Next, which cricket team has recently won the 5th title of Vijay Hazare Trophy by defeating Vidarbha cricket team in the finals held in Vadodara, Gujarat? So it is Karnataka's cricket team that has won the 5th title of the Vijay Hazare Trophy. Next, who is the international event ambassador for the 20th edition of Mumbai Marathon 2025 recently held in Mumbai, Maharashtra? So Mohammad Muktabar Jama Farah, right? He was the international event ambassador for the 20th edition of the Mumbai Marathon held in Mumbai, Maharashtra. Next, name the international Indian Grandmaster who recently won the 9th Johor International Open Chess Tournament in January held in Malaysia. So Inian Pennyvislam, right? He is the Indian Grandmaster who has won the 9th edition of the Johor International Open Chess Tournament. Next, identify the team that recently won the inaugural Women's Hockey India League title by defeating GSW Surma Hockey Club of Punjab and Haryana held in Ranchi. So, identify the team. It is your which team? It is your Odisha Warriors. Next, name the Indian track and field athlete who recently won the gold medal in the women's 60-meter hurdles at the elite indoor meeting in Nantes, France. So, who is that Indian track and field athlete? Jyoti Yarachi. Right? So, take a note of this. And one more thing, she is from which state? She is from Andhra Pradesh. Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Next, students, is our homework section. First, what is the rank of India in the LEED Green Building Certification? And name the country that secured the first position here. Second question, tell me recently where was the BIMSTEC Youth Summit held? Name that location and which edition of the summit was held. Tell me that also. Third question, tell me recently what was the rank of India in the Logistic Performance Index. Tell me the rank here. Fourth, in Henley Passport Index, what was the rank of India? Fifth, what was the rank of India of Mukesh Ambani ji in the Asia's 20 richest families list, right? Tell me Mukesh Ambani's family, that is Ambani family, what was the rank of it? And on global scale, tell me his ranking as the wealthiest person. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 11 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सुबह 5 बजे ये हमारी डीसीए की फाइल डल जाती है वीडियो, तो इसको ज़रूर देखा करो स्टूडेंट्स। सुबह उठते ही आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम रिवाइज हो जाती हैं एंड डेली बेसिस पे जैसे फिर आप अपना सोशल मीडिया भी चलाओगे, न्यूज़ पढ़ोगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। आज की वीडियो में हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे पीएआई बेसलाइन रिपोर्ट की, इसका एक इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया कि कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मर रही। देन हम बात करेंगे एक एमओए मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट की, जो कि साइन किया गया फॉर निर्देशक दीदी के फेज़ 2 को लॉन्च करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी लाने के लिए इन रूरल इंडिया लॉन्च किया गया है। इसी के अलावा इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर एंड को लॉन्च किया गया बेसिकली ताकि जो स्किल्स हैं वो यूथ तक पहुंचाई जा सके आने वाली जनरेशन के लिए, या फिर आने वाली टाइम में जो भी फ्यूचर में हमारी स्किल्स रिक्वायर होंगी उन तक हम पहुंच सकें, उनकी स्किल्स प्रोवाइड करा सकें। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ इसी के अलावा भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूवल्स की। यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनके द्वारा इसको चेयर किया जाता है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगी है। स्टार्ट करते हैं अपने कुछ कैबिनेट अप्रूवल से। सबसे पहला है 1600 करोड़ रुपए की एक स्कीम लॉन्च की गई है, या फिर इतनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की जाएगी, जो कि एक नई सब स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया 25 से 26 के लिए। देन हम बात करेंगे, ये तो थी पहली। सेकंड आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 19.2 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन का एक कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास रहेगा, जो कि पंजाब एंड हरियाणा के को कनेक्ट करेगा, बेटर कनेक्टिविटी होगी। देन आ जाते हैं 104 किलोमीटर के एक हाईवे को डबल करने की यहाँ पे बात की गई, तिरुपति पकाला कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन को, नॉट हाईवे को, रेलवे लाइन सेक्शन को, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में 1332 करोड़ की लागत से। तो ये 3 अप्रूवल्स यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एवर पाई बेसलाइन रिपोर्ट, PAI बेसलाइन रिपोर्ट। ये PAI होता क्या है? PAI है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, राइट? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पहले तो फुल फॉर्म याद रख लो। दूसरी चीज़ कि ये पहला एडिशन इसका लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायत एरियाज़ में या पंचायती लेवल पर क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या हम पावर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, किस जगह पर कौन सी पंचायत में ज़्यादा हमें पावर्टी के ऊपर काम होते हुए दिखा, गुड गवर्नेंस के ऊपर काम होते हुए दिखा, राइट, लाइवलीहुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम होते हुए दिखा, राइट। तो उसके बेसिस पे भी फिर एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स बनाया गया एंड एक रिपोर्ट बनाई गई कि कहाँ पे कितना काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लाने चाहिए हमें, ताकि एक स्मूथ रनिंग हो सके पंचायत की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो बेस्ट स्टेट कौन सी रहेगी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में, राइट? तो वो रहेगी गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड तेलंगाना, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसकी एक बेसलाइन रिपोर्ट, पहला एडिशन इसका रिलीज किया गया फॉर FY23। नेक्स्ट आ जाते हैं IEPFA एंड IPBB, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया ताकि फेज 2 लॉन्च किया जा सके निर्वेशक दीदी का, ताकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है रूरल एरिया में उसको बढ़ाया जा सके। इससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने से होगा क्या, रूरल एरिया में आपका लोगों का ज़्यादा ध्यान आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कैसे पैसे को सेव करें, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, राइट? तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, कैसे अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इनके सभी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। तो IEPFA ये क्या है? ये है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया न्यू दिल्ली बेस्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, IPPB के साथ, ताकि ये सेकेंड फेज लॉन्च किया जा सके निर्वेशक दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, इससे क्या होगा स्पेसिफिकली यहाँ पर जो पोस्टल वीमेन वर्कर्स हैं, राइट, एंड कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा ताकि लोकल एरियाज में ग्रोथ हो सके। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के ऊपर, फंड प्रिवेंशन, सेविंग हैबिट्स के ऊपर एंड डिजिटल बैंकिंग टूल्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। IPPB की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? R विश्वरन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा इसका। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा मिलके इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि स्किल्स गैप जो है उसको ब्रिज किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स के बारे में हम देख रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, बायो सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में, करेक्ट। तो हम एनर्जी सेक्टर में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इन फील्ड्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग स्किल्स चाहिए। और रोबोटिक सेक्टर हो गया, तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेक्टर्स में एंड लोगों को वो स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए ताकि इंडिया को ग्रो किया जा सके, एट पार लाया जा सके विद डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। एंड हम चाहते भी हैं, इंडिया का एम भी है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे स्किल्स
प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़रूरी है एंड इसीलिए इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो हैं बॉर्ज ब्रैंडे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोंजी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने इनॉग्रेट किया DFDR एंड CVR लैब को AIIB में, राइट। ये कहाँ पर है, ये उड़ान भवन में। DFDR क्या है, डाटा फ्लाइट रिकॉर्डर या फिर डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, राइट, कि मतलब फ्लाइट का डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। CVR लेबोरेटरी क्या है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये एक तरीके का, इसको हम बोल सकते हैं ब्लैक बॉक्स लैब। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये ब्लैक बॉक्स वो एक इक्विपमेंट होता है जो हर प्लेन में होता है कि मान लो कल को वो बेसिकली प्लेन की पूरी फंक्शनिंग स्टार्ट से लेके स्टॉप तक हर पैरामीटर्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है, करेक्ट। एंड प्लेन में मान लो कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये वो बॉक्स ऐसे हार्डी मटेरियल से बना होता है कि इसको ना के बराबर चोट है, मतलब कम डैमेज आए, इसको हम इस डाटा को रिट्रीव कर सकें। इस डाटा को रिट्रीव करने से होगा क्या, हमें यह पता लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसका क्या कारण है, किस वजह से हुआ, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए थे। फिर उस डाटा के ऊपर स्टडी की जाती है कि क्या हम स्टेप ले सकते थे कि इस डाटा को प्रिवेंट किया जा सके। एंड ऐसी डाटा को फीड किया जाता है और ऐसे ही आप देखेंगे कि AI मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज के टाइम पे आप देखेंगे जो एयरप्लेन्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो पायलट पे रन कर रहे होते हैं, राइट। ह्यूमन पायलट्स की तो ज़रूरत होती है कि भाई स्मूथ रनिंग हो। अगर कल को कोई भी एक ऐसी अनइंटेंडेड सिचुएशन आ जाती है सामने, तब एक ह्यूमन वहाँ पे उस स्टेप को ले सकते हैं एंड वहाँ पे हमें गाइड कर सके एंड मैन्यूवर कर सके। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम हर प्लेन आपका ऑटो पायलट मोड पे ही ऑन रहता है, ठीक है। तो ये है आपका राम मोहन नायडू जी के द्वारा DFDR एंड CVR लैब को लॉन्च किया गया। AAIB है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के दौरान, जो कि उड़ान भवन में ये लोकेटेड है, ठीक है। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, राम मोहन नायडू जी के द्वारा करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम बेसिकली आपके 11वीं क्लास एंड 12वीं क्लास बच्चों के लिए है कि उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जा सके इन एविएशन सेक्टर, जैसे पायलटिंग, एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर नेशनल वाटरवेज। अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले बोला गया था कि यमुना को क्लीन करके वहाँ पे हम क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, राइट। हम देख रहे हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे वाटरवेज बनाए हैं, राइट, नेशनल वाटरवेज, जिनके थ्रू जो लॉजिस्टिक्स है ना वो बहुत बेटर हो गई है। वहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है, रोड के जरिए नहीं जाना पड़ता, भीड़ कम लगती है। क्योंकि अगर गुड ट्रांसपोर्ट्स जो होती हैं, राइट, जिससे जो ट्रक्स हो गए अगर वो सिटी के अंदर आ जाते हैं तो बहुत हैवी जाम लगता है, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर रहा है हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर्स के लिए, करेक्ट। तो यहीं पे सरबंदना सोनोवाल जी ने डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया ताकि नेशनल वाटरवेज को हम यहाँ पे और बेटर किया जा सके, राइट। एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है, विजय कुमार, ठीक। मार्क दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे होगा क्या कि एज पर द न्यू रेगुलेशंस यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज ये एलिजिबल हो जाएंगी कि ये NOC मिल जाए इनको फ्रॉम इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल में ये इन्वेस्ट कर सके पैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड उनको यूज कर सके उन इनलैंड वाटरवेज को फर्दर, राइट। चलिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, चेयरमैन कौन रहेंगे अभी हमने डिस्कस किया, विजय कुमार। हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहेगा, नोएडा, UP में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पे रहेगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा, राइट। ये 2250 मीटर हाइट पे रहेगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे फोकस रहेगा इस सेंटर का, किस लिए, कि हम क्लाइमेट फॉरकास्टिंग के ऊपर काम कर सकें, एरोसोल्स की स्टडीज़ कर सकें, क्लाउड के माइक्रोफिजिक्स को कर सकें, क्लाउड फॉर्मेशन को स्टडी कर सकें, एंड क्या वेदर पैटर्न रहेगा इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, उसके ऊपर काम करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया, ये इसका टाइटल रहेगा, राइट। एंड ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लॉन्च किया गया है।
एक और चीज़, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे थे, ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, वो है उमर अब्दुल्ला। एंड यहाँ पे गवर्नर रहेंगे या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आप मुझे बताओ। नाम मैं बता देता हूँ, मनोज सिन्हा। आप मुझे होमवर्क में बताओ, ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे गवर्नर होंगे या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। भारत पेज रेजिलियंट पेमेंट इन्होंने सिक्योर किया आरबीआई का अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। देखो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम क्या करते हैं कि एक जगह से एक मर्चेंट से दूसरे मर्चेंट के बीच में ये पेमेंट रिसीव करते हैं, राइट। अब ये है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब इंडिया में ये ऑपरेट करेंगे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, एक दूसरे पेमेंट सेंड एंड रिसीव करने का काम करेंगे। तो ये हो गए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। लेकिन अगर इनको आगे मैं बोल दूं पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब इंडिया में ही नहीं, इंडिया के साथ साथ ये बाहर की कंट्रीज के साथ भी पेमेंट सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं वहां के मर्चेंट्स के बीच में, करेक्ट। तो भारत पे की सब्सिडरी है रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम, इनको यहाँ पे ये पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। अब इससे ये भारत पे एक्स अंडर ब्रांड, इस ब्रांड के अंडर यहाँ पे ये पेमेंट एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया इन FY26 ग्रो करेगी 6.7% से। रीजन बीइंग, अभी हम देख रहे हैं यूएसए ने ना टैरिफ्स लगा दिए हैं हर कंट्री पे, एंड फिर इन्होंने बोला कि अब 19 डेज तक यहाँ पे कोई भी टैरिफ नहीं रहेगा एक्सेप्ट 10% जो कि हर कंट्री पे लगने वाला है, एंड एक्सेप्ट चाइना जिनके ऊपर अभी हम शायद 104 था पहले, जो कि बढ़ा के अब शायद 125 कर दिया गया है, ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बट चाइना पे इतना ड्यूटी इम्पोज की गई है। अब इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई थी, मार्केट्स गिरने लगी थी, एंड स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही अलग तरीके से हिल गई थी। लेकिन अब 90 डेज़ का इन्होंने इस पर रोक लगा दिया कि 90 डेज़ बाद देखेंगे, तो अब ये वापस से स्टॉक मार्केट लड़ने लग गई। रिसेशन आने के बहुत चांसेस बता दिए गए थे, राइट। बॉन्ड मार्केट बिल्कुल ही हिल गई थी, इंडिया की भी, यूएसए की भी, पूरे वर्ल्ड की बेसिकली, राइट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस सारी चीज़ सिनेरियो के बीच में FY26 के लिए 6.7% GDP इंडिया की प्रोजेक्ट करी है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, मसातो कांडा, ये जापान के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, मनीला, फिलीपींस में। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे 69 मेंबर्स रहेंगे। एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस कर दिया है, कितना कर दिया है, 6% कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कट कर दिया है। ये दूसरा कट हमें देखने को मिला है, अब 6% का यहाँ पे रेपो रेट हो गया है। मूविंग ऑन, GRSE इन्होंने एक MOU साइन किया है SDHI के साथ, ताकि इंडिजीनियस कमर्शियल शिप बिल्डिंग को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, शिप बिल्डिंग को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। देखो GRSE क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया SDHI है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है, एंड यहाँ पे मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा इंडिजीनियस कंटेंट हो, हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को फोकस दें, एंड इंडिया में ही ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग करें। इससे क्या होगा, हमारे मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बेटर शिप्स होंगे, कमर्शियल शिप्स होंगे, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एज मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होगी, इंडिया में ही होगी, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई दिखेंगी इंडियंस के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे इस वेसल को कोड डेवलप करने की बात की गई, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं GRSE की बात करूँ तो GRSE के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये GRSE का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आ जाते हैं पूना वाला फिनकॉर्प, इन्होंने लॉन्च किया शॉपकीपर लोन बिजनेस फॉर स्मॉल रिटेलर्स। देखो अभी हम देख रहे हैं जेप्टो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है, इनके आने से हमें तो बहुत कन्वीनियंस हो गया है, राइट, कि आप जब एकदम सेकंड में कुछ ऑर्डर करो 5-10 मिनट के अंदर आपके घर पे सामान आ जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है स्मॉल रिटेलर्स पर, किराना स्टोर्स पर, राइट, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे टाइम पर उनकी हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें, यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प ने लॉन्च किया शॉपकीपर लोन, ताकि स्मॉल रिटेलर्स को यहाँ पे हेल्प की जा सके बाय प्रोवाइडिंग देम लोन। नेक्स्ट आ जाते हैं GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड हैदराबाद बेस्ड IIT हैदराबाद, इन्होंने अभी एक पार्टनर किया ताकि शिप बिल्डिंग को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा सके AI एंड डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज के साथ। देखो अगर AI आप मानो ना मानो स्टूडेंट्स, AI आने वाला है, AI आ चुका है, आने वाला क्या है, आ चुका है, राइट, एंड फ्यूचर में AI हर जगह यूज होता हुआ दिखेगा,
ऑटोमेशन आपको दिखेगा, राइट। एंड ये रियलिटी आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया है। हर बिजनेस में एआई को अपना इनकॉर्पोरेट, हर बिजनेस को करना पड़ेगा एआई को इनकॉर्पोरेट। अगर वो नहीं करते हैं तो वो इस रेस में पीछे छूट जाएंगे, करेक्ट। तो सिमिलरली इंडिया ने सोचा क्यों ना हम अपनी मैरीटाइम सेक्टर को हम भी एक एडवांस सेक्टर बनाएं, उसमें एआई यूज करें, राइट। तो फॉर सेम रीजन यहाँ पे एमओयू साइन किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आईआईटी के साथ टाइप किया कि आप नई टेक्नोलॉजीज बनाओ, आप नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाओ, आप नए नए इक्विपमेंट्स बनाओ एआई की मदद से, राइट, एआई को, ताकि हम उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में। एंड ये एशिया का पहला एआई ड्रिवन मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रहेगा जिसका एम रहेगा डिसीजन मेकिंग एंड प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया ओडिशा गवर्नमेंट के साथ ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश किया जा सके एट पैरादीप, ओडिशा। 61,077 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है कैसे हम उसको ग्रो कर सकें, राइट। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात की गई एंड इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस खत्म करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे स्टूडेंट्स। पहला है इक्विटी शेयर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, राइट। इनको एक्वायर किया जाएगा किसके द्वारा? सनलाम एनर्जिंग मार्केट के द्वारा एंड चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम कैडेट कंपनी के द्वारा। दूसरा अप्रूवल आ जाता है ऑफ जिट सिटी बेस्ड मल्टीपल्स प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी गिफ्ट फंड, राइट। ये एक्वायर करेंगे इन सब में अपनी होल्डिंग, मतलब इनमें ये बाय करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। होम्योपैथी के जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, राइट, इनका जो ग्लोबल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, करेक्ट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड होम्योपैथी एक गुड ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नवकर महामंत्रा दिवस एंड अर्ज किया 9 रेजोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। जो ये नवकर महामंत्रा दिवस है ना, बेसिकली ये जैन कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। एंड इसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक इवेंट हुआ था विज्ञान भवन में जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे बात की जाती है कि कैसे हम पीस को प्रमोट करें, नॉन वायलेंस को प्रमोट करें एंड इनर हार्मोनी को चैनल करें हम यूजिंग वेरियस नवकर महामंत्रा, राइट। इस महामंत्रा से ये जो चैंट्स है इनको रिसाइट करके, करेक्ट। तो ये टेक अ नोट ऑफ दिस। एक और चीज़ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा यहाँ पे एक फिलैलेक्ट्रिक कवर भी लॉन्च किया गया ऑन द नवरत्ना महामंत्रा डे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीनेम किया खुलताबाद को एज रतनपुर। आई रिपीट, खुलदाबाद को रीनेम किया गया क्या? टू रत्नापुर। याद रखेंगे ये टाउन की रीनेमिंग की गई है टू रत्नापुर। वही वीजा भी दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने रीनेमिंग की और क्या रीनेमिंग करी, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। ऑथर का नाम बताओ ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट 20, दैट इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा थे एंड चेयरमैन थे नीति आयोग के उस वक्त। इस बुक को रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन न्यू दिल्ली। तो वो है KS चौहान, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 2 वॉल्यूम रहेंगे इस बुक की एंड डॉक्टर KS चौहान ये एक सीनियर एडवोकेट है। नेक्स्ट, नेम द बुक ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष, राइट, जो पब्लिश की जाएगी 4th एस्टेट इंडिया के द्वारा एट द 41st डॉक्टर CD देशमुख मेमोरियल लेक्चरर एट द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के दौरान। तो उस बुक का नाम पूछा गया है वाइल्ड फिक्शंस। ये बुक बेसिकली क्लाइमेट चेंज, सोसाइटल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात करती है। इसके बाद आ जाते हैं उस टाइटल का नाम बताओ ऑफ द बायोग्राफी रिटन बाय जर्नलिस्ट S चक्रवर्ती दैट रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग द कोलकाता लिटरेसी मीट इन वेस्ट बंगाल के दौरान उसको लॉन्च किया गया था। तो बुक का नाम है सुमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो थी बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। पहला है द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिटी ग्रुप एंड फॉर्मर CEO ऑफ टाइम वार्नर इनकॉर्पोरेशन डैश, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। कौन है वो है रिचर्ड पार्सन। इनका 76 की एज में न्यूयॉर्क में निधन हुआ इन 1948। नेक्स्ट, नेम द फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मश्री अवॉर्डी हु पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। तो कौन है वो है पियरे सिल्वियन फिलियोजैट। नेक्स्ट, डॉक्टर
कटुंगल सुब्रमण्यम मनीलाल, इनको फेमसली के.एस. मनीलाल के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस बोटेनिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी हैं। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86 इन थिसूर, केरला। व्हेन डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस? कब इनको रिसीव हुआ ये? इन 2020। नेक्स्ट, डॉक्टर राजा गोपाला चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश हैं जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये काफ़ी फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इनको पद्मश्री से 1975 में सम्मानित किया गया था एंड पद्मा विभूषण से 1999 में। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्नि स्केलेटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग्स फ्रॉम हंगरी। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोस्टास सिमिटास, ये एक लॉ प्रोफेसर है एंड रिफॉर्मिस्ट, इनका निधन हो गया। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के? तो ये ग्रीस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। 1996 से लेके 2004 तक 8 साल के लिए यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे ग्रीस के। नेक्स्ट, इन जनवरी प्रोमिनेंट डैश नॉवेलिस्ट एंड राइटर नॉबर्ट डिसूजा, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर ना डिसूजा, इनका निधन हो गया। तो ये प्रोमिनेंट कन्नडा राइटर, नॉवेलिस्ट एंड राइटर है। नेक्स्ट, राइटर, फिल्म मेकर एंड पद्मश्री अवार्डी डैश रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। वो कौन है? वो है प्रीतीश नैंडी, राइट। फिर राइटर, फिल्म मेकर एंड पद्मश्री अवार्डी प्रीतीश नैंडी, इनका रिसेंटली इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। नेक्स्ट आ जाते हैं द 6th एंड द फाइनल स्कॉर्पियन सबमरीन डैश अंडर द प्रोजेक्ट P75। इसको डिलीवर किया गया बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी ऑन 9th ऑफ जनवरी। तो INS वर्कशीर। नेक्स्ट आ जाते हैं द रिटायर्ड सोल्जर डैश नोन फॉर फाइटिंग इन 4 वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। तो हवलदार बलदेव सिंह, ये वो रिटायर्ड सोल्जर हैं जिनको नोन फॉर फाइटिंग इन 4 वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, H. लक्ष्मण पास्ड अवे इन चेन्नई, तमिलनाडु। ये एसोसिएटेड थे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ड्यूरिंग हिज करियर? TVS होल्डिंग से ये एसोसिएटेड थे, राइट। ये फॉर्मर ED हैं सुंदराम क्लेटन लिमिटेड के, जिसको अब TVS होल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली द सीनियर एडवोकेट एंड इंडियाज लीडिंग लॉयर डैश, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 85। तो ये है इकबाल M. चांगरा। नेक्स्ट, द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स अंडर DRDO डैश रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। तो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ CABS डॉक्टर K. रामचंद, राइट, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 82। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड एंड बैलन डियोर विनर डैश पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। तो कौन है? वो है डेनिस लॉ। नेक्स्ट, कार्लोस मुरिको फ्यून्स काटेंगा, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 45। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? ये एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लीड green building certification and name the country that secured the first position here. Second question, tell me recently where was the BIMSTEC youth summit held? Name that location and which edition of the summit was held, tell me that also. Third question, tell me recently what was the rank of India in the logistic performance index? Tell me the rank here. Fourth, in Henley passport index, what was the rank of India? Fifth, what was the rank of India of Mukesh Ambani ji in the Asia's 20 richest families list, right? Tell me Mukesh Ambani's family, that is Ambani family, what was the rank of it? And on global scale, tell me his ranking as the wealthiest person. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.